Hi, how are you dear student? Everybody fine? In the last lecture, part 1, we discussed about nomenclature of alkanes, branched chain alkanes. In the last lecture, 5 rules was completed. हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में देखा था कि ब्रांच हैविंग अल्केन्स एंड 5 रूल्स हमने कंप्लीट किया था. हियर रूल नंबर 6. रूल नंबर 6, branch having branches. Sometimes branch has some sub branches. In this case, what we have to do? Our simple rule, first of all, we have to choose the longest chain. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Yes, second possibility, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's not allowed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, not allowed. So our parent chain having 10 carbon. So our main compound is decane. Okay, understood? This is our parent chain. Here you can see this one is branch. Okay, this one also branch. Now position of this branch is 4th. उसका नंबर 4 आ रहा है यहाँ से और 6 आ रहा है. यहाँ से देखेंगे तो 5 और 7 आ रहा है. तो 5 और 7 तो लिस्ट नंबर नहीं है. सो हम क्या करेंगे, 4 और 6 चूज करेंगे. ओके, 4 for methyl. But what about this? This one is a branch. Okay, this one is a parent chain. This one is also branch, but you can see there is something, some branches are there. Yes, carbon atom of the branch that attached to the root. This is root. Alkane is numbered 1. Yes, our branch is starts from here. So we have to start 1 here. जो क्या होता है, जो लंबी वाली चेन होता है उसमें जहां से अपना वाला नंबर कार्बन स्टार्ट हो रहा है उसका नंबर 1 देंगे. इसमें भी हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट वाला चेन चूज करेंगे. यू कैन सी दिस वन इज लॉन्गेस्ट. इट मीन्स प्रोपाइल. सो प्रोपाइल इज अवर ब्रांच एंड these two are sub branches. Okay, these are sub branches. यहाँ से चेन ब्रांच शुरू हुआ. So 1, 2 and 3 longest प्रोपाइल. तो मिथाइल है, उसका सब ब्रांचेस है. उसका नंबर क्या है देखो, 1 और 2. So 1, 2 dimethyl propyl is our part. This part is of 1, 2 dimethyl propyl, which is on 6th position. Yes, so branches having branches group comes into bracket. Branch having branches group comes into bracket, simple bracket. You can see. Yes, ये देखो मिथाइल है, ये भी मिथाइल है. So 4 methyl, then 6 1, 2 dimethyl propyl, उसके बाद डेकेन. जो ब्रांचेस होती है उनको, जो सब ब्रांचेस होती है उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. You can see branch is start from here. So 1, 2, 3 and longest chain is propyl. There is sub branches. So 1, 2 on second or first position पे मिथाइल है. So 1, 2 dimethyl propyl. This branch having group branches group comes into bracket
and number is 6. This one is methyl, so methyl stood first. Then after dimethyl propyl decane. This is the name. Branch, having a branch. Yes, sometimes here some alkyl group comes as a branch. Yes, we can see. Suppose CH2, CH2, CH3 comes here. So this one is normal propyl. Okay. Sometimes here, suppose comes CH3, CH2, CH3. So this one is secondary butyl. You can see this one is secondary butyl, this one normal propyl. Yes, so sometimes as a branch in the chain comes isopropyl. Okay, this one is isopropyl. Sometimes in the longest chain of the carbon there is a tertiary butyl comes. Yes, this part is the tertiary butyl. You can see. So what we have to do? Iso and neo. Yes, iso and neo is the not normal but iso. This is neopentyl. You can see neopentyl. So here what happens actually? Isopropyl is a single word. Neopentyl is single word. So according to alphabetical order, हमको क्या लेना है? Alphabetical order के हिसाब से N नहीं लेंगे, P नहीं लेंगे, N लेंगे. Here iso is one of the combined word, so we have to take I here. But in the secondary butyl, we have to take B for alphabetical order. This is not a single word, separate. This one is we are considering as a prefix. Secondary butyl का prefix होता है. So alphabetical order के हिसाब से हम B लेंगे. Tertiary butyl में tertiary वाला word है वो prefix होता है. इसमें भी butyl वाला B लेंगे. But isopropyl is a single word. We are not taking iso as a prefix. So we have to take I. Neopentyl में N लेंगे. ऐसा rules होता है. I think, I hope you understand very well. If there happens to be two chains to equal size, कई बार क्या हो रहा है? Given compound में दो equal chains longest बन रही है, then that chain is to be selected which contains a more number of side chains. कई बार जो कंपाउंड दिया होता है इसमें दो और मोर देन दो, टू और मोर देन टू चेन्स लॉन्गेस्ट और एज. तो हमको वो चेन पसंद करना होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस हो. नाउ यू कैन सी दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, there are 10 carbon in the chain. So this one decane. In this chain there is a one in this part. There are two branches. Only two. Yes, sir. Only this one and this one. In this longest chain there are only two branches. Okay. Now second possibility we are taking. You can see दूसरा वाला पॉसिबिलिटी ये रहेगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 and 10. ये भी 10 कार्बन हो रहे. Okay, so here is also 10 carbons. This one our longest chain, but there are 1 2 and 3 branches आ रही है. वो पहले केस में क्या हो रहा था, ओनली 2 ब्रांचेस आ रही थी. Here 3 branches आ रही है. इन सेकेंड वाला केस है, इसमें ब्रांचेस ज्यादा है, तो we have to choose that. After selection of the longest chain, numbering is to be done from the end closer to the substituent. Yes, sir. We have to give number, so we get last number of branches. When we start here, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6, इसका नंबर 6 रहेगा ये वाली ब्रांच का, और इसका 8 8 रहेगा. So 6 8 8 is not possible. So we have to take list number 3 3 और 5 रहेगा. So ये considerable रहेगा. List number we have to choose. Now it is done. On third position there are 2 methyl groups. Okay, 2 times methyl. ये वाला यहीं से स्टार्ट होगा. You can see ये वाला only branch है, but ये वाला branches having branch. This one is a branches having branch. So यहाँ से branch शुरू हो रहा है. So 1 2 3 and 4. This one butyl, and this one is ethyl on second position. So ये वाला 2 ethyl butyl रहेगा, which comes into bracket by branch having branch. Group comes branch into bracket. So 2 ethyl. So E here N. So E stood first. On 5th position there is branch having branch. So 5th position पे 2 ethyl butyl है. On 3rd position पे 2 times 3 3 dimethyl, and main parent chain is decane. This is IUPAC name of the compound. Now come to the next example. Here we have to choose longest chain first, rule number 1. Okay, we have to give IUPAC name of this given compound. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. In the longest chain there are 10 carbon, so decane. Second choice 1 2 3 4 5 6 7 8. It's not possible. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It's not possible. So ये वाला, this one is the longest chain. Here is 2 branches, one of and second one. You can see CH3 twice का मतलब ये होता है कि जो ये वाला कार्बन है CH वाला, उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स है. ये यहीं से कनेक्टेड है. This one is condensed form. So this one is isopropyl. ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल है. This one is secondary butyl. Secondary is the prefix of name. So in alphabetical order we have to take B. Iso is the continuous word, so we have to take here I. Okay. First of all we have to choose longest chain. Then after we have to give list number of our branches. When we give number from here, so 1 2 3 4 5 6 and 7.
from left hand side, which is 4 and 5. So which one is least number out of 2? So 6 and 7 is not least number, 4 and 5 is least number. Okay, so this one stood in 4th position, this one on 5th position. It comes up on 4th position, there is isopropyl. In 5th position is secondary butyl. Then we have to take in the written B वाला फर्स्ट रहेगा. So in 5th position 5 secondary butyl, then 4 isopropyl and decane. This is IUPAC name. What about this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 carbon in the chain. So nonene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's not possible. 4, 5, 6, 7, 8. So this one is the longest chain. Having 9 carbons, so nonene is our main chain. Okay? And here branch is start from here. So 1, 2 and 3. This is our main branch. This is our main chain. This one is our branch. And these two are sub-branch. Okay. So in 5th position, from both hand side it's number 5. On 5th position of the main chain, there is a branch having branch group is there. So methyl stood first. And दोनों का पोजीशन 2 है. 2,2 डाइमेथाइल प्रोपाइल. जो ब्रांचेस होता है उसको सब ब्रांचेस होता है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले सब ब्रांचेस लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे 2,2 डाइमेथाइल. उसके बाद मेन ब्रांच प्रोपाइल एंड सब कुछ ब्रैकेट में आएगा. ब्रांच हैविंग ब्रांच substituent comes into bracket on 5th position and main compound is nonene. Okay, this is IUPAC name. Now nomenclature of cyclic compound. This one in cycle means in the ring there are 2 carbon atoms. 1 or 2 carbon never makes a ring. Our ring start with number of carbon 3. So this one cyclopropane. Why CH2? Here 2 bond is formed. So remaining are 2 and actually valence of carbon are 4. This one cyclobutane. This one cyclopentane. This one cyclohexane. If there is any alkyl group present, only one, it means methyl. It means CH3 is there. So methyl is a prefix. So we have to take ahead of the name methyl cyclohexane. Okay. Sometimes this one group is there. So here is CH2 CH3. So there will be ethyl cyclohexane. Sometimes CH3 is there. Isopropyl cyclohexane. But sometimes 2 branches are there. 2 alkyl groups are there in the ring. Yes, if only one alkyl group is present, तो एक ही alkyl group रिंग के साथ आ रहा है, तो हमको क्या करना होगा, उसका
जो नेम होता है अल्काइल ग्रुप का वो नेम लिखेंगे, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। वी आर नॉट नीड टू गिव एनी नंबर्स। एक ही सब्स्टिट्यूटेंट होता है तो उसका नंबर देने की जरूरत ही नहीं है। All the 6 number of carbon are same in the ring. Anywhere this group is present, we can say isopropyl. Suppose this isopropyl group is here, then no problem. This one isopropyl cyclohexane. But दो बार अल्काइल ग्रुप आ रहा है तो नंबर इज कंपल्सरी, एंड दो अल्काइल ग्रुप्स are present in the ring, so we have to follow alphabetical order of the numbering. Yes sir, ये वाला प्रोपाइल है, उसका फर्स्ट लेटर P है। ये वाला मिथाइल है, उसका फर्स्ट लेटर M है। So in alphabetical order M is coming first, so we have to give number 1 to the methyl group, then 3 of a propyl group. In written also we have to follow alphabetical order, so इसका नाम रहेगा 1 methyl, then 3 propyl cyclohexane। नंबरिंग यहाँ से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 और 5, बट ये वाला 1 और 5 हो जाएगा। It's not considerable, so we have to give list number. So 1 2 3, 1 or 3 is considerable, so 1 methyl 3 propyl cyclohexane। ये दो वाला है, उसका रूल देखा। 3 alkyl groups are there in our compound, so no need to follow alphabetical order, we have to follow जो दो ग्रुप आ रहा है, एक ही ग्रुप आ रहा है तो नंबर की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ग्रुप का नाम लिखो और मेन रिंग साइक्लोहेक्सेन लिखो। इफ दो बार ग्रुप आ रहे हैं मिथाइल और प्रोपाइल, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाला है मिथाइल है, थर्ड वाला प्रोपाइल है, सो दो चॉइस है, दो अलग अलग। सपोज दिस वाला मिथाइल है तो वेरी सिंपल 1,3-dimethyl साइक्लोहेक्सेन, बट दोनों अलग अलग ग्रुप है। इस केस में हम क्या करेंगे, मिथाइल वाला फर्स्ट आएगा सो उसका नंबर 1 रहेगा, प्रोपाइल वाला एबीसीडी में बाद में आएगा सो वो 3 वाला रहेगा। सो 1 methyl 3 propyl cyclohexane। Yes, now we are talking more than 2 alkyl groups are present in our ring, so we have to follow more branch carbon gets lower number, more branched में more than 2 branches वाला कोई कंपाउंड, ब्रांचेस वाला कोई कंपाउंड आ रहा है तो उसका नंबर लिस्ट रहना चाहिए। ये दोनों का 1 1 रहेगा, उस वाला 3 रहेगा। अल्फाबेटिकल हिसाब से देखेंगे तो इथाइल वाला फर्स्ट आता है, मिथाइल वाला बाद में, तो क्या हो जाएगा, अपना नंबर वाला सीक्वेंस ब्रेक होगा, 1 3 3 होएगा, और ये एक्चुअली 1 1 3 रहना चाहिए, सो लिस्ट नंबर ये रहेगा। सो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, नंबर के हिसाब से हम चूज करेंगे। 2 ब्रांचेस से उसका नंबर, एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचेस है तो उसका नंबर लिस्ट रहना चाहिए, बट इन रिटर्न इथाइल वाला फर्स्ट लिखेंगे, सो 3 इथाइल, देन 1 1 dimethyl cyclohexane। I hope everybody understood। आपको वीडियो अच्छा लगा आप शेयर करोगे, लाइक करेंगे, बाद में मिलेंगे कल से नए पॉइंट के साथ। टिल देन बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर।